एक्टिविटीज के अंदर Okay. स्टार्ट करना, बेसिकली स्टार्ट करना सबसे पहले जो लोग एम्प्लॉयज फिजिकली अवेलेबल हैं, Okay. ओके, Okay. उनके सिस्टम में इंस्टॉल करना है, ट्रैकर फिल करना है, ओके. Okay, right. So Avinash will take you further. Avinash, I will take 1 more minute, okay? Dear, dear, are you there? Yeah. So how we are managing the inventory of the Thailand assets inventory, laptops and mobiles? For laptop, we set up the inventory asset, but we just like a box for use the external drive USB only. Okay. Yeah. So we have Google Sheets for the assets detail, no? Yeah. Okay. So dear, you need to ensure every laptop has a unique system name, host name. So we have specific host name, no, for the each laptop or desktop to identify them. Yes, we got the Okay. So the we will number of that yeah, asset. we will consider that name as a host name. Okay. มันทำเป็น host name ป่ะ ที่เรา Right. ใช้อ่ะ Okay. เรา Okay. ต้อง Okay, Avinash, you can take it from here. Okay, and Okay. guide them properly throughout the process, how to install the antivirus and where we need to update the details. Okay. Yeah, Avinash, please go ahead. You are able to see my screen? Yes. Okay. Yes, sir. Now we are going to implement Cortex and Prisma. Cortex, we are using Cortex for antivirus and Prisma for VPN. Hello. Hi. Yes. Okay. Good to go. So Cortex as a antivirus and Prisma is VPN. So we are going to install Prisma in a CFSPL user and SAP user. Okay, and Cortex we have installed all system of Cast24 laptop. So this is the inventory of Thailand. But here I not mention host name. So we have require a unique number of each and every system. So first we have require unique number so that we can mention host name in the laptop. After it we will install, because after installing of Cortex we have to check Cortex is installed or not in laptop. So for the tracking purpose we have to check with host name. Suppose for India we have this host name. Okay, so first we have checked this host name Cortex has been installed or not. Okay, so we are maintaining this tracker here. Suppose host name is the lab 005336 host name. If host name has been changed, this is the host name. So this host name is comes from this is our Sapphire software which are using inventory. Avinash, we don't have Sapphire for Thailand. Okay. Uh, This is for the India. Okay. Yes, we will just run the host name as the menu. वहाँ का host name फिर So, Avinash, just give me a second. Can you move to the tracker? tracker, yes. Go to the Thailand. Thailand. Okay. So dear, we have this inventory for Thailand. Okay, we have serial number of the laptops. You need to update the host name here. Okay. Once you update the host name here and put your remark Cortex install or not. Once you put the remark install, you need to mention the installation date, on which date you have installed the software in the laptop. Okay. Yes. Yeah, the link for the software will be shared by the Avinash with you, and he will also share this sheet with you to edit the Thailand tracker.
Okay. We can use each and every system serial number of a host name. Can we use a serial number against host name for each and every system? Yeah, Okay. you can mention laptop or mention the serial number, or if you have prepared the inventory like laptop THI 001. Yes, yes, like this. Just a minute. Okay. Else we can. So you have a host name. We have mentioned a unique host name. So kindly plan what is the host name of each and every system So, accordingly. dear, just check my message in the chat. I have suggested you one host name. Okay. Can we use the short one, just TA for Yeah, we Thai? can also use this. We can also use this. So we will take these from one to as per the available inventory. So 1, 2, 3, 4, 5. So you need to mention these in the tracker as well and prepare a separate inventory for yourself. So you will have the host name detail with the serial number mapping. Okay. Fine, This dear. yes, this host name should be also mentioned in tracker. Uh, Avinash, for example, you can fill the one example. mhm. Suppose Take the this that is one. the No? host name. Yes. This is the host name. Suppose we have installed a Cortex in this laptop, and laptop host name is lap ts 0001. So we have mentioned go to tracker, and suppose this is the serial number. So paste here. But, hello. So paste here host name. Once host name has been filled, mention here host name updated. Yes. Cortex, if Cortex has been installed, mention here yes. And when we will install today, mention your date when we will install. So host name should be mentioned, and serial number ensure host name is and serial number both are not same because suppose we have installed Cortex in this laptop, so host name should be 002, not 001. So each and every system having host name should be different. Host name So should be unique, like not repeated again. mm. So once you installed Cortex, so mention here a host name, and after installation of Cortex, mention here yes, and Cortex installed yes, and when you install, please mention here date. Once you mention all the colon, after that I will check the host name. Suppose you installed Cortex in this host name, so we are copy host name, and after that we are going. This is our dashboard. So, dear, you need to ensure that if there is no host name available right now, you need to create that host name. First, you need to set the host name. After that, you need to install the software. This is the details of laptop which is installed the Cortex. Okay, so right now we have installed 1700 I think. Hello.
Yes, we have installed Cortex in this laptop. Okay, suppose we have installed Cortex in this laptop. So we have checked from our dashboard Cortex is installed or not. If you install the Cortex in laptop, so basically details will be reflected here after checking with hostname. Right now you have not installed the Cortex, so I'm not able to find out the Cortex installed or not. For Okay. testing purpose, this is the inventive of India. This hostname has been already installed Cortex. Hostname has been changed. Yes, this is the hostname, and Cortex has been installed. And 27 date is mentioned also. So suppose we are going to copy the hostname from here and find out the Cortex is installed or not. The Cortex has been installed. This is the host name which you are mentioning during installation. Host name, and the laptop is connected with the antivirus server. Okay, laptop operating system, Ubuntu, and agent version. This is the agent version of Cortex agent version, and system IP address and username. This is the details. This is the serial number. So without if you are not mention your host name, so I am not able to find out the serial number of the asset. So you have to mention host name. After that we will check the serial number, and we will mention here. So dear, once you install, change the host name of a laptop, and after changing the host name, you will install the Cortex software. Avinash will be able to track the details here. Okay, the system will comes up here, and he can check and verify the details. Okay, sir. Okay, so there are two software, Cortex and VPN. I think Thailand we need to install only Cortex because there is no CFSPL employee or SAP user. Okay. I'm right now, Punappa. I think there is no VPN. The SAP user there now. Yes, no SAP in No Thai. SAP, na? Means we need to install only Cortex in Thailand. No VPN. Okay. So, dear, if you have any query or question, you can share that in chat box. It will be easy for us to understand your question and query. ตอนนี้มีคำถามปะ Okay, but later while you working, if Yes, later if you find any problem or and require any support from from our side, you can always connect to Avinash Mishra. We will guide you and help you out throughout the process. Okay, Okay. thanks. We So, have Avinash, separate. Yes. अब फटाफट ना विवेक को और राहुल को भी गाइड कर दो. You can speak in Hindi if required, or you use English, which is comfortable with them. Okay. Okay. Separate exe for Windows. We have separate exe. Mac having separate file, and Linux having separate file. So we will send a link to you. We will download from FTP and install in this laptop. Mac, Windows, and Ubuntu having different setup. So I will send to you and download after you installed in laptop. Once installation done, please mention update the tracker. After you are updating the tracker, we will check from our end and update the serial number in our dashboard. Once your serial number has been updated in our dashboard, means installation successfully done. Suppose you have installing the Cortex and any error getting, so please share the snapshot with me. We will check with SCPL team or require any support from them. I will check and resolve your issue. Okay, sir. अविनाश राहुल अच्छा सुनो. Yes, sir. ये दो सॉफ्टवेयर हैं, कॉर्टेक्स और VPN. Right. ठीक है. कॉर्टेक्स सबके लैपटॉप में डलेगा, VPN डलेगा सिर्फ उन लैपटॉप में जो एम्प्लॉइज फाइनेंस से बिलोंग करते हैं. ठीक है. और SAP यूज करते हैं. ठीक है. Okay. और we have 3 OS in our company: Mac OS, Windows, and Ubuntu.
and we have separate installation file for each OS. Okay, Avinash will share the software through the drive or whatever. You can download it on your laptop or install the user. Okay. Before installing the user's laptop, you need to verify the host name. If the user's laptop host name is as per our inventory or not. If not, we need to check the serial number of that employee in Sapphire and take the laptop's tag number. Okay. And change the host name as per the inventory, like lab-00 whatever. First, we need to change the host name. After changing the host name, restart the laptop and install the software. Once you install the software, need to come here in this tracker. इस ट्रैकर में डिटेल फिल करनी है, किस सीरियल नंबर पर हमने डाला है, उसका होस्ट नेम क्या किया है हमने, ठीक है, इंस्टॉल कर दिया है, यस, और डेट डालने कब इंस्टॉल किया. ओके, यस. आपने अपने लैपटॉप पे भी कर लिया है क्या इंस्टॉल? नहीं सर, अभी नहीं करा है. अच्छा, सबसे पहले अपने लैपटॉप पे करना है. ओके डियर, यू नीड टू डू दिस फर्स्टली ऑन योर लैपटॉप. ओके सर. तो देखो क्या है कि कोई भी लैपटॉप में अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, तो उसका सीरियल नंबर एक बार चेक करो. सीरियल नंबर यहाँ पे डाल के सर्च करो. सपोज मैंने कोई एक सीरियल नंबर ले लिया, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, ये सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है. अभी इसका होस्ट नेम ये रहेगा, इसका होस्ट नेम ये है. तो ये होस्ट नेम मैं खुद से नहीं डाला हूँ, ये इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग है. इस होस्ट नेम को यहाँ से कॉपी करोगे या फिर ये सीरियल नंबर मैं कॉपी करता हूँ और ये सफायर जो हम यूज़ करते हैं, सफायर में जाकर डालते हैं इसको. तो ये देखते हैं क्या दिखा रहा है इसमें एसेट नंबर. अभी ये एसेट नंबर आया. एसेट नंबर क्या है? lab/006572, ठीक है. अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था? 6572, जो सब कुछ सेम है. लैब के जब जो वहाँ पे स्लैश था, यहाँ पे हमने हाइफन दिया है, ठीक है. जो एसेट नंबर जो है वही हमारा होस्ट नेम है. तो एसेट नंबर यहाँ पे पूरा है कास्ट 24. तो मुझे कास्ट 24 नहीं डालना है, लैब से स्टार्ट करना. लैब यहाँ पे स्लैश की जगह हाइफन रहेगा. हाँ, बाकी ये जो नंबर एसेट नंबर जो आगे है वो एसेट नंबर रहेगा. यही हमारा होस्ट नेम होता है. सपोज किसी यूजर का यूजर बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी सीरियल नंबर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम नीचे में जाके सबसे नीचे में जाके मैनुअल उसका ऐड कर देंगे सीरियल नंबर, और उसका जो इन्वेंट्री से चेक करेंगे, जो भी वहाँ पे होस्ट नेम दिखाएगा, होस्ट नेम मेंशन कर देंगे. यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हाँ मैंने कोटेक्स इंस्टॉल किया, होस्ट नेम चेंज कर दिया, तो यहाँ पे यस डाल देंगे. उसमें कोटेक्स अगर इंस्टॉल कर दिया तो वो यहाँ पे यस कर देंगे. कब किया आप, तो डेट डाल देंगे. किसने किया, मतलब आपने किया है, तो आप अपना नाम डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है. जब ये आप इतना मेंशन कर दोगे, फिर मैं उसका होस्ट नेम, सपोज इस लैपटॉप में सपोज आपने कर दिया, ठीक है, मैंने इसका होस्ट नेम यहाँ से लेके अपने डैशबोर्ड में मैं चेक कर रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन हुआ या नहीं हुआ. तो मैं अगर चेक करता हूँ यहाँ पे, तो इंस्टॉलेशन हो गया है, ठीक है. मतलब हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है डैशबोर्ड में, और ये कनेक्टेड भी है. तो हमारा यहाँ पे यही काम होता है कि आपने अगर यहाँ पे ऐड कर दिया है, अगर आप यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हाँ होस्टेज हमने चेंज कर दिया, कोटेक्स इंस्टॉल कर दिया, सारा कुछ हमने फिल कर दिया. मैं इसका सीरियल नंबर यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं जाके यहाँ पे मैनुअल ऐड करता हूँ. यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे पूरा जो सीरियल नंबर दिख रहा है आपको, ये पूरा ब्लैंक रहता है. तो हमें यहाँ पे जाके मैनुअली ऐड करना पड़ता है. तो यहाँ पे मैं जाकर सीरियल नंबर ये खुद से मैं ऐड करता हूँ. ये ऑलरेडी एडेड था तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एडेड है, ठीक है. तो आपको यही करना है. किसी एसेट का अगर नहीं दिख रहा है आपका होस्ट नेम या फिर इसमें डिटेल्स उसका नहीं है, तो आप उसमें देखो हमें यहाँ पे 3 है. एक CSPL यूजर है, तो इसमें हमें कोटेक्स इंस्टॉल करना है, ठीक है, जो हमारा एंटीवायरस है. और CFSPL जो है, CFSPL में हमें कोटेक्स और प्रिज्मा दोनों ही करना है. प्रिज्मा हमारा VPN है, तो वो VPN कैसे करना है, वो अगर आपके पास कोई लैपटॉप हो, मतलब जिस यूजर पे आप कर रहे हो, तो आप करना. उसके बाद से अगर नहीं तो फिर मुझे रिमोट दे देना, मैं बता दूंगा कैसे करना है. अभी मैं आपके लैपटॉप पे कोटेक्स करके देखूंगा, प्रिज्मा भी कर दूंगा, बट प्रिज्मा हमारे यूज का नहीं है, वो फाइनेंस के लिए, SAP यूजर के लिए, ठीक है. तो अगर आपका डेटा कोई यूजर फाइनेंस में है, तो आप अगर यहाँ पे उसका डेटा सर्च कर रहे हो CSPL में, तो नहीं दिखेगा. उसके लिए आपको CFSPL में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको SAP में चेक करना पड़ेगा, ठीक है. तो SAP और CFSPL, ये जो 2 है डेटा है, इस दोनों में हमें कोटेक्स और SAP दोनों ही इंस्टॉल करना है.
और CSPL जो है, CSPL में हमें कॉर्टेक्स इंस्टॉल करना है, मतलब एंटीवायरस, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया और ट्रैकर में अपडेट नहीं किया। उसमें क्या होगा कि हमारा जो काउंट है ना, मतलब कि जो काउंट दिखाता है कि हमने 1700 या फिर 2000 या 2200 लैपटॉप में मैंने इंस्टॉल कर दिया, तो हमारे यहाँ डैशबोर्ड में तो दिखाएगा कि हमने 2000 लैपटॉप पे कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रैकर में अपडेट नहीं होगा, तो हम क्या होगा कि सीरियल नंबर अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम अपडेट नहीं कर पाएंगे तो फिर उस इंस्टॉलेशन का कोई मतलब नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जो भी आप इंस्टॉल करेंगे और उसका जो भी डिटेल्स है वो ट्रैकर में आप अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद मतलब प्रॉपर इंस्टॉलेशन तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आप अपने लैपटॉप में एक बार करना, और बाकी कुछ अगर इशू आएगा तो एक बार मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। देखेंगे, देख के उसको रिजॉल्व करेंगे। आप अपने लैपटॉप पहले आप अपने लैपटॉप में कर लेना। सबसे पहले हमें क्या करना है, होस्ट नेम चेंज करना है। होस्ट नेम जब चेंज हो जाएगा तो वो रीस्टार्ट करने के लिए बोलता है लैपटॉप, तो उसको तब तक के लिए लेटर करके रखेंगे जब तक हमारा कॉर्टेक्स इंस्टॉल नहीं हो जाता। वो जब कॉर्टेक्स इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, रीस्टार्ट कर देंगे। जब रीस्टार्ट हो जाएगा फिर आप वो कर देना, क्या बोलते हैं हम, ये देखो, जब रीस्टार्ट हो जाएगा तो आप एक बार क्रॉस चेक करने के लिए ये होता है कॉर्टेक्स का सिंबल, ठीक है। ओके, इसको आप ओपन करना। ये जब ओपन हो गया तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा, ये इनेबल दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन दिखा रहा है कनेक्टेड। ये क्या है, Cast24 ट्रैप paloalto.com, ये जो हमारा एंटीवायरस है, एंटीवायरस का ये सर्वर है, ठीक है। तो ये सर्वर से कनेक्ट हो गया था। तो अभी ये हम मतलब हमारा लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड दिखा रहा है, तो ये लास्ट डेट दिखा रहा है, ठीक है। आज का डेट दिखा रहा है मार्च महीने, और यहाँ पे इनेबल दिखा रहा है। अगर ये इनेबल नहीं दिखाए कभी तो आप इसको यहाँ से टास्क बार से ओपन करना, ओपन करके यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक करना। चेक नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे कनेक्टिंग होगा, थोड़ी देर 2-4-10 सेकंड या फिर कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट भी लग जाता है, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग होगा। जब कनेक्टिंग हो जाएगा ना तो यहाँ पे फिर से चेक नाउ आ जाएगा, इसका मतलब कि ये कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे इनेबल दिखाएगा आपका, ठीक है। तो आपको बस बेसिकली इंस्टॉलेशन के बाद एक बार क्रॉस चेक, एक बार रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट जब हो जाए तो आपको एक बार टास्क बार से इसको ओपन करना है। ओपन करके यहाँ पे एक बार देख लेना है कि ये इनेबल है या नहीं है। इनेबल है, दैट मीन्स कि वो इंस्टॉलेशन 100% हो गया है। फिर आप ट्रैकर में अपडेट कर दोगे, फिर हम यहाँ से चेक करेंगे और हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो हम उसका सीरियल नंबर लेके वहाँ पे ऐड कर देंगे, और हमारा जो रिमार्क्स है यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगा डन। मतलब आपने इंस्टॉलेशन कर दिया और हमारे यहाँ डैशबोर्ड में भी दिख रहा है, इसका मतलब 100% इंस्टॉलेशन हो गया। कभी कभी क्या होता है इसमें देखना, कभी कभी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, देखो नॉट रिफ्लेक्टिंग इन आवर डैशबोर्ड, ठीक है। ये उस केस में होता है कि किसी ने इंस्टॉलेशन कर दिया, ठीक है, इंस्टॉलेशन कर दिया, लैपटॉप को रीस्टार्ट नहीं किया, तो और ट्रैकर में डाल दिया कि हाँ मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया, कॉर्टेक्स भी इंस्टॉल कर दिया, डेट भी डाल दिया, और वो भी डाल दिया कि हाँ हमने किया था। तो उस केस में क्या है कि वो लैपटॉप में इंस्टॉल तो कर दिया लेकिन लैपटॉप को रीस्टार्ट नहीं किया था। और अगर लैपटॉप में रीस्टार्ट भी किया होगा तो उसको यहाँ पे क्रॉस चेक नहीं किया था। कभी कभी क्या होता है ना, किसी लैपटॉप में ये ऑटो कनेक्ट इनेबल हो जाता है, ठीक है, और किसी में ऑटो नहीं होता है, तो वो हमें मैनुअल करना पड़ता है चेक नाउ करके। तो वो क्या करते हैं, कॉर्टेक्स इंस्टॉल कर दिए, लैपटॉप रीस्टार्ट नहीं करते हैं, वो छोड़ दिए, तो वो हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो जब हम चेक करते हैं तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे रिमार्क्स में डाल देते हैं नॉट रिफ्लेक्टिंग इन आवर डैशबोर्ड। मतलब इंस्टॉल तो आपने कर दिया लेकिन हमारे यहाँ इंस्टॉलेशन डैशबोर्ड में शो नहीं कर रहा है, मतलब कि इंस्टॉलेशन का कोई मतलब नहीं। आपने अगर 20 भी लैपटॉप में इंस्टॉल किया है और हमारा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब तभी बनता है जब हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है डैशबोर्ड में, तब, ठीक है। हाँ, तो अभी कोई दिक्कत तो, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो, और नहीं तो फिर बाकी बाद में तो आप इंस्टॉलेशन करोगे, कुछ दिक्कत आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार अपने लैपटॉप में करना, उसके बाद खुद पता चलेगा कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले होस्ट नेम चेंज करना है, उसके बाद से रीस्टार्ट करना है, उसको टास्क बार में जाकर चेक कर लेना है कि वो मतलब वहाँ पे इनेबल दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। इनेबल दिखा रहा है, आप ट्रैकर अपडेट कर दो कि हाँ होस्ट नेम चेंज हो गया, और होस्ट नेम आपने वही चेंज किया जो इस ट्रैकर में मेंशन है पहले से। और अगर आपको इसमें नहीं मिल रहा डेटा तो आप कहाँ जाओगे, सफायर में जाकर उसका सीरियल नंबर डालोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा उसका होस्ट नेम। तो ये स्लैश हटा के और यहाँ पे हाइफन डाल देना है, ठीक है। तो आप जो भी एसेट मींस जो भी एसेट नंबर है उसमें जो लैब से इनिशिएट होता है उसमें सिर्फ ये
हाँ स्लैश हटा हटा के के हाइफन डालना है, राइट? हाइफन डालना है, बस कुछ बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस हाइफन हटाना है, सॉरी स्लैश हटाना है और हाइफन डालना है इसके अंदर। हाइफन डालना है। हाँ, और यही सेम यहाँ पे ट्रैकर में डाल देना है। जैसे मान लो कोई भी लैपटॉप है तो उसका इस ट्रैकर में डिटेल्स नहीं है, तो तुम वहाँ पे उसका सीरियल नंबर डालोगे तो ये लैपटॉप का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तुम्हें होस्ट नेम भी मिल गया और यहाँ से होस्ट नेम तो मिल ही गया, और तुम्हें ये भी मिल गया कि ये कहाँ, मतलब इसका डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है। फिर ये लैपटॉप, ये यूज़र कहाँ का है, ठीक है। उसके बाद से तुम्हें एम्प्लॉय कोड भी इसका मिल गया, ठीक है। इसका मेल आईडी भी मिल गया। ये सब डिटेल्स यहाँ से तुम जाकर वहाँ पे फिल कर दोगे, तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे, चेक करके मतलब हम अपडेट कर देंगे, मतलब इंस्टॉलेशन हो गया। राइट। तो और बताओ अगर कुछ है तो। सर एक बार इसका मुझे लिंक मेल पे कर दोगे सेंड? हाँ लिंक तो मैं दे दूंगा जो अभी। डाउनलोडिंग का। हाँ हाँ, वो मैं अभी मेल पे ही डाल दूंगा या फिर सेलेक्ट कर अविनाश, दूंगा। हाँ ठीक है। Yes, sir. Dear, I think Yes, you sir. have understand the process. Yes sir. Okay. So now Avinash will share the detail and the tracker which we need to fill after installing the software, and also will Okay. share the the setup of all 3 OS. First, you all need to install on your own laptop after changing the host name. Okay. Once you Done. change the host name and install on your own laptop, update the tracker, and just select the Avinash so that he will verify if these are installed or not. If these will be installed, you can move further to install on other laptops as well. Okay sir. Okay dear, if you have any query you can ask us right here. Oh, okay, fine. You can you can connect with us anytime if you will have any challenge or issue, okay, in the installation process. May I ask for other issue about the MacBook? At the India, do you guys box for USB or not? On USB? Mac? Yes, on iOS Mac. No, right now we are not blocking any USB. Okay. After I think installing this software, we can process further. First, we need to cover the whole assets, all the laptops with the software. Post that we will check the policies on the USB blocking and other things. Okay. As of now, we are not blocking any USB right now. Anywhere. I have sent the installation, file link in chat of Mac and Linux and Windows all. Also, I am sending mail after the meeting. Okay. So and for the